Hello, children. I think all of you are well and safe at home. Now you have spent so many days of holidays. Now let us start the next part of the chapter because we have to complete the syllabus also, you know very well. So, fundamental rights were completed. Now we have to start the next part, that is check on the arbitrary action of the state. What is arbitrary action? Let us talk about. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट है क्या. एक्चुअली फंडामेंटल राइट जो है हमें ये राइट देता है, हमें ये पावर देता है, हमें एम्पावरमेंट करता है कि जो हम स्टेट के यानी गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीज़न मनमाने ढंग से नहीं लगा सकती, नहीं ले सकती. गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीज़न आर्बिट्ररली, यानी अपने खुद के वेलफेयर के लिए स्टेट फ्री होके कोई डिसीजन नहीं ले सकता बाय द फंडामेंटल राइट. इट मीन्स कि नो डिसीजन कुड बी देयर विच कैन वायलेट आवर फंडामेंटल राइट. सो इट इज़ सेड हियर कि फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल राइट चेक ऑन आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी फंडामेंटल राइट के थ्रू स्टेट के आर्बिट्री एक्शन पे चेक यानी कंट्रोल लगता है. द फंडामेंटल राइट्स सेक्योर टू द इंडिविजुअल आर इन नेचर ऑफ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन और द restriction on the arbitrary action of the state. Article 13(2) declares that all laws and executive orders force immediately before the commencement of the constitution inconsistent with the fundamental rights are void to the extent of such inconsistency. यानी ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट के संग मैच नहीं करता या फिर उसे जो है किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट को नुकसान करता है, इट मीन्स हर्ट करता है, वायलेट करता है, तो दैट लॉज कैन बी डिक्लेयर वॉइड, नल, यानी उस कानून को माना नहीं जाएगा. दिस आर्टिकल thus provide, which article? Article 13(2). This article thus provides for judicial review of all the legislations in India. However, the Constitution has empowered the state to make valid exceptions to the rights on the grounds of such as security of the state, public order, public morality, etc. यानी मैंने पहले भी आपको बताया है, इफ़ एनी लॉ एनी रूल इज़ देयर फॉर द वेलफेयर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री पीपल, देन इट कैन बी देयर, तभी से वैलिड माना जा सकता है. किसी एक्सेप्शंस यानी किसी अपवाद के रूप में, किसी विशेष स्पेशल कोई ऐसी जो सर्कमस्टेंसेज है उस रूप में, अदरवाइज इट कुड बी डिक्लेयर्ड नल इफ़ it hurt the fundamental rights. So it is said here, check on arbitrary action of the state. Now here is given restriction imposed. What are the restriction imposed? Fundamental rights are not absolute. Reasonable restrictions can be imposed on them because of the general welfare of the society. यानी एकदम से हम उसके लिए rigid नहीं हो सकते. Some restrictions are there. First, the fundamental rights can be suspended when the president declares a state of emergency in the country in case of war, external aggression or armed rebellion. Such a suspension of rights is temporary. As soon as the emergency is over, the rights are restored. I think it is clear to you. During the circumstances of war, external aggression or armed rebellion, our fundamental rights could be suspended for the particular time. You can see कि आज भी at present हमारी fundamental right जो है क्या है, suspended ही तो है. We cannot move anywhere ना freely. The time is given because of that pandemic situation. Now, second, for the security of the state and national interest, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इम्पोज्ड. यानी जहाँ भी हमारे देश की सिक्योरिटी के, आपको पता है कि कई जगह चेकिंग होती है, हम उस जगह पे नहीं जा सकते, तो इट इज़ गिवन
for the national interest, reasonable restriction on the fundamental rights can be imposed. Parliament has the power to modify the application of the fundamental right to the members of the armed forces, police force or intelligence organization so as to ensure proper discharge of their duties. यानी जो पार्लियामेंट है इन सारे इंस्टीट्यूशन को, पुलिस, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, दे could ensure proper discharge of their duties. Now the third point, there are some laws which restrict use of these rights in public interest. The Maintenance of Internal Security Act, that is called MISA, MISA, Defense of India Rules, DIR, Preventive Detention Act, जिसको आपने अभी पढ़ा था, PDA, the National Security Act, NSA, Essential Services Maintenance Act, ESMA, etc. are made to safeguard the interest of the nation, but they curtail the use of the fundamental right. It means these all the institutions are appointed to सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यानी हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, बट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन दे कैन कर्टेल द यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Now children, let us start the suspension of fundamental rights. The fundamental rights guaranteed by the Constitution remain suspended when, while a proclamation of emergency is made by the President under Article 352. यानी किस सिचुएशन में ये सस्पेंड हो सकती है? तो इन द सिचुएशन ऑफ proclamation of emergency by the President under the Article 352. Underline these children. As soon as a proclamation of such emergency is made, the legislature is free to make any law and the executive has the liberty to take any action, even though it restricts the right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, profession or occupation. These restrictions remain in effect only as long as the emergency is in operation. Yani we can say during the proclamation of emergency all of our fundamental right could be suspended. यानी ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से सस्पेंड कर दी जाए. बट वाई? बिकॉज ऑफ द national security. It could be possible during the emergency time that can be proclaimed by the president only under Article 352. Okay. Now, when a proclamation of emergency is in operation, the president may by order declare that the right to move a court for the enforcement of fundamental right shall remain suspended. यानी जो हमें right मिली हुई है ना, right to move to the court. Which right? It was said beta, right to constitutional remedy that can be also suspended. यानी वो right भी हमारी नहीं होगी हमारे पास. In case of such a situation, the Supreme Court and the High Court shall be powerless to issue the writs or to make any other order for the enforcement of any fundamental right. यानी इमरजेंसी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं होता कि दे कैन इशू द writ. I think it is clear to you children. Now, till the time the fundamental rights are over, the discussion of fundamental rights is over now. Now let us start the fundamental duties, but in next video. So thank you so much children.